हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसपीपी इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम एसी कंप्यूटर का डीबीएमएस इस सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट देखने वाले हैं, यानी कि एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल। चलो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें एसक्यूएल में हम डीडीएल, डीएमएल, सिलेक्ट क्वेरी, स्ट्रिंग, डेट एंड न्यूमेरिकल फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन, व्यू, इंडेक्स, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड यूनिट में हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल क्या होता है। सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर structured query language. It is a language of a database and almost all companies use databases to store data. एसक्यूएल एक ऐसी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। मतलब हमने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनी उनका डाटा स्टोर करती है, उनका सारे एम्प्लॉयज का डाटा, सारा कंपनी का डाटा तो स्टोर करने के लिए एसक्यूएल का यूज करती है। एसक्यूएल एक डाटाबेस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, लाइक एम्प्लॉय का डाटा और कंपनी का डाटा, सारा डाटा एसक्यूएल में स्टोर कर किया जाता है। जैसे और एक डाटाबेस है मोंगोडीबी, उसमें भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे डाटाबेसेस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, लाइक मोंगोडीबी, एसक्यूएल, जिससे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एक डाटाबेस है। उसके बाद देखते हैं आगे। एसक्यूएल मेक्स यूज ऑफ क्वेरी व्हिच इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू डीबीएम्स। एडवांटेजेस देखते हैं एसक्यूएल के। SQL is a very easy and simple to learn. SQL allows user to create, update, delete, and retrieve data from database. SQL allows user to set permissions on tables, procedures, and use in database. Difference DDL versus DML. जो difference देखते हैं DDL and DML में. DDL stands for Data Definition Language. DML stands for Data Manipulation Language. DDL commands are used to define database structure. Database structure को डिफाइन करने के लिए, डाटाबेस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए डीडीएल कमांड्स का यूज होता है। डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग डाटा विद इन databases. It works on whole table. It works on one more rows. Changes within DDL commands can be rolled back. Changes by DML command can be rolled back. सो एग्जांपल क्या है इसके? क्रिएट, जैसे हम टेबल्स क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्रिएट का यूज करते हैं, जो क्रिएट एक डीडीएल है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज टैग है। अल्टर मॉडिफाइज एग्जीक्यूटिंग टेबल्स को मॉडिफाइज करता है। अल्टर एक ड्रॉप डिलीट्स कंप्लीट टेबल यू एक्सेट्रा। एक डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल है। इसका एग्जांपल क्या है? डीएमएल का, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। सिलेक्ट यूज टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। इंसर्ट यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन टेबल। अपडेट यूज टू अपडेट वन और मोर फील्ड्स ऑफ टेबल। मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कौन कौन से कमांड्स है? हमने डीडीएल के कमांड्स देखे, लाइक क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये डीडीएल कमांड्स है। और डीएमएल कमांड्स सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद टेबल्स। टेबल्स क्या होता है? टेबल्स डाटाबेस इज कंसिडर्ड एज कंटेनर फॉर टेबल्स एंड होल टेबल इज ग्रेड विद रोज एंड कॉलम्स। डाटाबेस के साथ हम कैसे टेबल को तैयार करते हुए देखते हैं। टेबल को तैयार करने के लिए वी नॉर्मली क्रिएट डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, एक सिंटैक्स है टेबल तैयार करने के लिए, लाइक डाटाबेस को तैयार करना, डाटाबेस का नाम लिखना। मतलब क्रिएट से हम डाटाबेस को तैयार, टेबल को तैयार करते हैं, लाइक क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नेम स्टूडेंट। टेबल इज क्रिएटेड इनसाइड डाटाबेस यूजिंग क्रिएट टेबल, टेबल नेम। सो हमने देखा कि टेबल को कैसे तैयार करना है। क्रिएट एक कमांड है, उसका यूज करना है। उसके बाद डाटाबेस लिखना है। उसके बाद डाटाबेस का नेम, लाइक इधर डाटाबेस का नेम स्टूडेंट है, एक्सेट्रा। जैसे डाटाबेस का नेम स्टूडेंट है तो हमने स्टूडेंट लिखा। टेबल इज क्रिएटेड इनसाइड डाटाबेस यूजिंग क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डाटा टाइप, कॉलम टू नेम, डाटा टाइप, कॉलम नेम, डाटा टाइप। क्रिएट टेबल इन्फो नेम वेरिकर 20 रोल नंबर एंड, मतलब क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद नेम, रोल नंबर, ये सब। Inserting data into table syntax. Insert into table name values. Insert एक syntax है डाटा में, टेबल में कैसे डाटा इंसर्ट करने का है। देख लीजिए इधर देखिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम एन, वैल्यूज, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू एन। इंसर्ट इन इन्फो नेम, रोल नंबर, वैल्यूज, डीके वन। मैंने देखा कि डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में, ऐसा कुछ। अपडेटिंग डाटा फ्रॉम टेबल सिंटैक्स, अपडेट टेबल नेम,
set column 1 is equal to value 1, where condition, example update info set roll number 2, where name is equal to dk. Deleting data from table, syntax, delete from table name, where condition, like delete a syntax set, जैसे टेबल से हम कुछ वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं, लाइक डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम है इन्फो वेयर कंडीशन है रोल नंबर 2। उसके बाद देखते हैं एसक्यूएल के डीएमएल कमांड्स को, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स को। इसमें सिलेक्ट है, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फेच डाटा फॉर द डाटाबेस टेबल। सिलेक्ट से हम डाटा को फेच कर सकते हैं, द रिजल्ट रिटर्न्स द डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम द टेबल नेम। कॉलम 1 यानी कि ये कॉलम है, रोल नंबर एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, सो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना, सिलेक्ट लिखना। उसके बाद कॉलम 1 यानी नेम, कॉलम 2 रोल नंबर फ्रॉम, और टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है इन्फो। We can select all records from the table using character. Select from info. Keyword distinct can be used along with select statement to obtain unique values from table without duplication. Where query. Where command is used to specify some condition. Like where query का where command का हम syntax देखते हैं. Syntax select column 1, column 2, up to कोई भी column ये पर्यंत. From table name where condition. Example select column 1 name from table name, table का नाम है info, where condition roll number is equal to 2. So the order by keyword is used to sort the result set in ascending descending order. Syntax select column 1 column 2 from table name, order by column 1 column 2 ascending and descending order. String operations देखते हैं, like the like operator is used in where clause to search for specified pattern in column. There are two characters often used in conjunction with like operator. Percentage represents 0, 1 or multiple characters. Underscore represents exactly one character. Syntax select from table name or column name like condition. Example select from customers where customer name like a%. Following statement selects all customer with customer name starting with a. Constant क्या होता है देखते हैं, constant में होता है प्राइमरी की, प्राइमरी constant is defined to uniquely identify the records from the table. टेबल में से जैसे यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही एक में वैसे विशिष्ट रिकॉर्ड होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का यूज होता है। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, प्राइमरी की में जरूरत से यूनिक वैल्यूज होने चाहिए। एग्जाम्पल कंसिडर वी हाउ टू क्रिएट स्टूडेंट इन्फो टेबल विद रोल नंबर नेम जेंडर सिटी, मेकिंग रोल नंबर एज प्राइमरी की इज हेल्पफुल as it is help identifies records correctly. Foreign key is used to link two tables. Foreign key for one table is actually primary key for of another table. Example, consider two tables, student info with roll number, name, gender, city as columns and roll number as primary key. Subject info with roll number, subject name, subject code. A roll number from subject info is referred to as foreign key. Unique constant is used to prevent some values in column. Not null. By default, a column can have null values. We can set column values as non-null by using not null constant. Example, create table student, roll number int, अगर null होगा, 0 होगा तो not null, name varchar not null. In operator, the in operator allows to specify multiple values in a where clause. Syntax select in all from table name where column name in value 1 value 2. For example, select from student info where roll number इन वैल्यू 1 से 3 के बीच में हमें सिलेक्ट करना है इन ऑपरेटर। इसके बाद चेंज स्टेटमेंट हम ड्रॉप देखते हैं। ड्रॉप कमांड से क्या होता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं डाटाबेस से। लाइक ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा टेबल उड़ाने के लिए, टेबल रिमूव करने के लिए, टेबल पूरा खत्म करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड टेबल डोमेन्स एंड कंस्ट्रेंट्स, देयर आर टू ऑप्शंस फॉर ड्रॉप, cascade and restrict. To use the restrict, user must delete each element individually, then drop schema itself. Otherwise, to remove database schema completely, use cascade option. Table is to be deleted, then command is example drop table students cascade. Alter command. Using alter command, we can add new column or delete some column from table. Syntax alter table. Alter command से कोई भी
टेबल में हमें न्यू कॉलम ऐड करना है और डिलीट करना है सेम कॉलम, तो अल्टर कमांड का यूज होता है, जैसे कि सिंटैक्स अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम, डाटा टाइप। एग्जांपल अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, ऐड कॉलम नेम सिटी, डाटा टाइप। We should add city column to student info table. Alter table column के नेम student info, मतलब टेबल का नेम स्टूडेंट इन्फो, ड्रॉप कॉलम नेम सिटी और उसका डाटा टाइप। दिस विल डिलीट सिटी कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, मतलब स्टूडेंट इन्फो इस टेबल से सिटी कॉलम को डिलीट करता है। उसके बाद देखते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्स इज ए पॉइंटर टू डाटा इन डाटाबेस इन टेबल्स। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, data retrieval becomes fast and efficient. Syntax for creating an index: create index name on table name. Consider book table ID, book name, author 005, 006, 007, DBMS, SOPs, computer networks। एक टेबल तैयार किया है, उसके वो कॉलम नेम है और डाटा रो के ऊपर। We can create index name IDX using field ID of book table. Create index IDX ID on book ID. If you create index on all the attributes, it will require more disk space and also more memory. Hence, it is not recommended to create index on all attributes. Aggregate functions. Aggregate function allows you to perform a calculation on set of values to return single value. Average used to compute average value. Average से हम average value को calculate करते हैं. Count यूजर यूज टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। काउंट सारे वैल्यूज को काउंट के लिए यूज करने के लिए होती है। मिनिमम यूज टू गेट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड कॉलम। सिंटैक्स मिनिमम डिस्टिंक्ट ऑल एक्सप्रेशन। मैक्सिमम वैल्यू से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उसमें से। सम वैल्यू यूज टू गेट टोटल सम वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड कॉलम। स्पेसिफिक कॉलम से कैसे सम वैल्यू ऑल कॉलम में से सारे के सम्स निकाल सकते हैं। सम डिस्टिंक्ट ऑल एक्सप्रेशन। उसके बाद सेट ऑपरेशंस। Union operator is used to combine results set of two or more select statements. Its select statement must have same number of columns. Select statement में same number of columns होने चाहिए, same data type होने चाहिए, how they mean same order होना चाहिए. Syntax: select column name from table 1 union select column name from table 2. Intersect used to return only common rows written by two select statements. Syntax: select column name from table name where condition. Intersect select column name from table 2 where conditions. Except used to represent self-difference in query, returns all rows present in one table and not in other. Select column name from table 1 except select column name from table 2. So एक inner join का operation है जो दो टेब the inner join creates a new result table by combining common values of two tables। मतलब जो कॉमन वैल्यूज होते हैं कॉलम के वो दो टेबल्स के बीच में, उसको ज्वाइन करने के लिए इनर जॉइन यूज होता है। जैसे कि उसका सिंटैक्स है सिलेक्ट टेबल 1 कॉलम 1 टेबल 2 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 on table 1 common field is equal to table 2 common field। Left join outer join it returns all rows from the left table even if there are no matches in right table। Syntax: select table 1 column 1 table 2 column 2 from table 1 left join table 2 on table 1 common field is equal to table 2 common field। Right join में होता है outer join, it returns all rows from right table even if there are no matches in left table। Syntax: select table 1 column 1 table 2 column 2 from table 1। Right join table 2 on table 1 common field table 2 common field। Full join outer join returns the result of both left and right tables। Syntax: select table 1 column 1 table 2 column 2 from table 1। Full join table 2 on table 1 common field table 2 common field। Views in SQL are kind of virtual tables. Views also has rows and columns as they are in real table in database. Creating a view. We can create a view using a create view statement like syntax is create view, name as select column name from table name, where condition। View update view command can be used to modify the data view। ये सब आप देख सकते हैं इधर। सो हमने पूरा देखा सेकंड यूनिट का, बहुत इजीली पढ़ाया है हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।